Hello everyone, hello. How are you all? कैसे हैं आप लोग? Welcome to Unacademy Class 7th channel. And if you are from class 7th, or if you have any brothers, sisters, or friends from class 7, this is the right platform to be right now because we are going to teach science to you in a way which is fun and which is very easily understandable. Not just science, but we have all other NCERT subjects on our channel. And if you have anyone who is from class 6 to 8, you can ask them to join the respective channels because this is going to be one fun ride. So first of all, let me tell you a little bit about myself. I am Mohammad Al Khalid and I am a fresh graduate from IIT Guwahati. जी हाँ, IIT. So we will be learning a lot of things from experimenting because I love doing experiments, and throughout my course I will be showing you different ways to experiment and learn the concepts which we will be talking about from the textbooks. So आज का जो गर्मा गर्म टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, वो है हीट. तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. देन वी विल लुक एट how to measure the heat, which is temperature, and what are the different things which we use for measuring. जैसे थर्मोमीटर होता है, सबको पता है. Then there are different types of thermometers. तो वो क्या है, we'll look at those. Then how to read the thermometer. उसके बाद में modes of transfer of heat, that is conduction, convection, radiation. ये सारी चीजें हैं. अगर आप अभी इसको देखेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है और मैं ऐसे अंदाज में आपको समझाऊंगा कि आपको लाइक कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं फिर इसको. So and we'll look at some cool concepts as well as land breeze and sea breeze. So let's start. तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू सी अ टेबल जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम है एंड उनके साइड में लिखा हुआ है हॉट और कोल्ड. सो यू हैव टू टेल मी विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड. आई विल पुट अ टिक अराउंड देम बिकॉज ये हीट से रिलेटेड है सब्जेक्ट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो आइसक्रीम, ओके देखिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ये मैंने इसीलिए दिया है सो दैट यू जस्ट स्टार्ट द टेबल. सो आइसक्रीम इज कोल्ड, एवरीवन नोज दैट. टी, व्हाट अबाउट टी? अनलेस इट्स आइस टी, इट इज गोइंग टू बी हॉट. या फिर बहुत देर रखा रह गया, आपको चाय बना के तो दे दिया लेकिन आपने पिया नहीं, then it becomes cold. So let's stick with the freshly prepared tea which is always hot. What about sun? अभी अभी गर्मा का मौसम खत्म हुआ है. लेट्स नॉट गो देयर. बहुत गर्म होता है, इतनी गर्मी हुई है ना मुझे इस गर्मा में मत पूछो. आई एम सो ग्लैड अभी थोड़ा सा गर्मा खत्म हुआ है एंड वी हैव एंटर्ड द मॉनसून्स. सो sun is obviously hot. Coca-Cola is, I have never had a Coca-Cola. I have never seen a person having Coca-Cola which was not cold because मजा नहीं आता यार. We all have Coke for the fun of it. So let's put a cold. Now comes the interesting part. You have phone after playing PUBG. ठंडा होता है गरम, जल्दी बताओ. अभी आप लेके जब खेलना शुरू करते हो फोन में तो फोन is like normal, cool normal ऐसे. Then you play one arcade match. तब तक भी it's fine, it's handling it well. Then you play a classic match. Then you play another classic match. It starts getting warm. Then you play one more classic match. जब तक आपको मॉम बुला रही होगी, बेटा खत्म करो, घर में काम करना है, पढ़ाई करना है अभी. बट नहीं, मैं तो फोन में 3 मैच खेलूंगा और फोन आपका हो जाता है गर्म. ठीक है, मारने लगता है फोन. So how do you know that the phone became hot? फोन तो आपको बोलता नहीं है कि हे ब्रो मैं गर्म हो गया, अभी रख दो फोन, मॉम भी बुला रही है. नहीं, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नहीं आता. फिर कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली बिकॉज आपने उसको हाथ में लिया हुआ है एंड थ्रू द अमेजिंग सेंस ऑफ टच विच ह्यूमंस हैव, तो वी टच समथिंग एंड वी नो गर्म हो गया. देख के तो नहीं बता सकते ना. लाइक इफ आई शो यू समथिंग, कैन यू से इफ इट इज हॉट और कोल्ड? अगर मैं मेरा फोन दिखाऊं तो it's very difficult. For some objects we can, but mostly we touch them. God has given us amazing sense of touch and we touch an object and we know कि हाँ ठीक है, ये गर्म है या ठंडा है. चाय गर्म है, इतना गर्म है कि मैं पी सकता हूँ आराम से, या ठंडा हो गया है. These things easily we know. So let's look at a small experiment. Let me activate my secondary camera. So just a second. So here you can see that I have 3 glasses of water, right? इन सब में पानी, मैं बोल रहा हूँ, there is nothing else. It's transparent. Which one of them is cold? Can you say? Yeah,
obviously the one which is on the left is cold because आपको दिख रहा है कि उसके अंदर ice है and it has some water droplets condensed होके बाहर है. So sometimes it's easy and you can say कि okay, this object I can tell its temperature relatively it's cold or hot. But these two, what about them? इसमें ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है? So here is where our sense of touch comes in. I'll just put my finger in it and let's see. Right wale mein I put my finger. It's a bit warm. It's not hot, but it's warm. I can definitely feel it. And this one, okay, this is cool. Yeah, अच्छा है. But अच्छा होना तो नहीं चाहिए. Let's check this one. Okay, this is cold. I have put in a lot of ice cubes in that, and अभी सारा घुल गया है और ये काफी ठंडा हो गया. Let me check the center one again because it was a bit warm, cool, right? Okay, now definitely it is warm. ये क्या हो रहा है मुझे like एक second. Let's go a bit back in time. When I was filling these, तो the leftmost one, ये वाला जो है, इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला था. It was warm water. जो leftmost one है, इसके अंदर मैंने ice cubes डाले थे. Is cold water. But the center one was tap water यार. ये गर्म भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था. It was just normal room temperature water. But मैं यहाँ से जब चेक किया तो मुझे ये लगा गर्म है. वहाँ से चेक किया तो मुझे लगा ये ठंडा है. एक सेकंड. Let's do the ultimate test and find out if it is cold or warm. I'll put my right hand in the warm water. I'll put my left hand in the cold water. I'll keep it like that. Ooh, ठंडा है यार काफी. Left वाला, right वाला गर्म है. Let me put both of my fingers in the center one at the same time. I will know for sure, right? Okay. Something is wrong with my fingers. Because अभी मेरा लेफ्ट हैंड को लग रहा है कि ये पानी गर्म है और मेरे राइट हैंड को लग रहा है कि ये पानी ठंडा है. Which is weird. Not only is it weird, but it also tells us something. It tells us that our सेंस ऑफ टच, जो मैं बोल रहा था कि वी हैव दिस अमेजिंग सेंस ऑफ टच जिसमें हम हाथ लगा के पता कर सकते हैं, नॉट सो मच. आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल एट ऑल. तो वी कैन से रिलेटिवली कि हाँ ये इससे ठंडा है थोड़ा सा, बट वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में हम यूज कर सकते हैं. बट जनरली इट इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑफ टेलिंग इफ ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट. बिकॉज हमने देखा कि सेम जो ग्लास हमारे पास था उसको हम ठंडा भी दिखा रहे थे, उसको हम गर्म भी हमको समझ आ रहा था टच से. तो वी नीड अ मेथड ऑफ मेजरिंग हीट प्रॉपरली, राइट? क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छे से काम करना है, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दैट. सो साइंटिस्ट केम अप विद दिस अमेजिंग वे एंड दे created a way to measure heat, and it's called temperature. So the measure of hotness of an object is known as temperature. This is temperature बढ़ा दिया रूम का, AC का टेम्परेचर कम किया, गिरा दिया. So that is the temperature of an object. वो heat कितना गर्म है टेम्परेचर से पता चलता है. And this temperature is always measured in Celsius degrees. So we write it like this. ऐसे यहाँ पे C से Celsius और यहाँ पे एक छोटा सर्कल आएगा. So this is a symbol which represents degree Celsius. जैसा हम जब स्केल से मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या फिर आप कहीं दूर जा रहे हो तो गाड़ी में किलोमीटर्स में मेजर करते हो कि हाँ मैं इतना किलोमीटर के. वैसे ही जब आप हीट मेजर करते हो तो इसको सेंटीग्रेड में आप मेजर करते हो, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं इसको फिर. तो एंड द डिवाइस व्हिच वी यूज फॉर मेजरिंग हीट, ये तो आप सबको पता है, दैट इज yes, it is a thermometer. We use a thermometer to measure heat and temperature. So there are different types of thermometers. So let's look what a thermometer is made up of. Okay. So I have a thermometer over here actually. Can you see this? This is a thermometer. And you can see that it is made out of a long, narrow, uniform glass tube. Like ये लंबा है पहले तो, and it's narrow. You can see like जो अंदर से ट्यूब जा रहा है इसमें, इट इज अ वेरी नैरो ट्यूब एंड इट्स यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मींस एक ही साइज का है. लाइक यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, ऐसा नहीं है. जो जहाँ पे भी टेम्परेचर का स्केल है, इट इज यूनिफॉर्म इन साइज. सो इट्स अ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. सो वी नो व्हाट a thermometer is made up of. And this corner which you see, this shiny place,
It's called the bulb of the thermometer. I'll show it to you on the screen, you can see. So this place, it is the bulb of the thermometer, right? ये bulb है thermometer का. So now this bulb, it contains mercury. इसके अंदर mercury होता है. The bulb is not made out of mercury, point to be noted. It's just made out of metal, probably steel. उसके अंदर mercury है और जब ये गर्म होता है तो उसमें से mercury निकल के ऐसा ऊपर आता है and then we can note the temperature. Like here you can see कि इसमें से mercury ऐसे निकल के बाहर आता है. Like the mercury comes out from here, it rises up and we see the temperature in that way. And the range of the thermometer is from 35 degrees centigrades. You can see 35 written over here, right? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 degrees centigrade. That is the normal range of a clinical thermometer. Now, why is it a clinical thermometer? Because ये range किसका around है? Do you know what is the average temperature of human body? It is around 37 degrees centigrade. Exactly. We use this thermometer to measure our body temperature. जब किसी को fever आता है, then we just pop it in our mouth and check the temperature. उससे हमको पता चल जाता है कि हमारा body का क्या temperature है. So this clinical thermometer is designed for measuring human body temperature. That is why the range is around 37 degrees जो average human body temperature है उसके around. So we have the temperature from 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. Generally इससे कम या इससे ज़्यादा human body temperature नहीं जाता. So how do you read a thermometer now? Okay, I'll show it to you. It's actually not that difficult. It's very simple. So you see यहाँ पे screen पे you see this 35 written over here, 36, 37. So what happens is wherever the mercury has risen, यहाँ देखो ये mercury ऐसे निकल के आया. It looks like a thread, right? This is mercury. This is mercury. मैंने अभी line उतारा, draw किया है इसके ऊपर. So that is mercury. So to measure the temperature, what you have to do first is you look at, okay, since this is here. So 37 यहाँ पे है and it is more than 37 and it's definitely less than 38. So the temperature is 37 degrees something. And now you see these small divisions, right? यहाँ पे देखो ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. So all of these are small increments of degrees. So 37 से लेके 38 तक होगा 1 degree, okay, 1 degree centigrade. And so this is 1 degree, and these small increments which I said, each of these lines represents 0.1 degree centigrade. So since the thermometer का mercury level is here right now, जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं, it's like 1, 2, 3, 4, 5. So right now the temperature of the thermometer over here is 37.5 degrees centigrade, which is perfectly normal for a human body. So now you know how to read a thermometer. So what you do is basically you keep the thermometer under your tongue, right? So before that we have to take certain precautions because ये मेरे मुंह में जाएगा, उसके बाद में someone else is going to use it. Transfer of disease can happen, and during these times we have to be especially more extra careful about these things. So let's look at the precautions which we have to take. So first of all, before using, we have to make sure that this is clean. We put an antiseptic solution on that and clean it, or we use clean water and clean the bulb because that is the part which is going in our mouth, right? Then we hold it firmly, give it a few jerks, ऐसे, so that the thermometer का mercury level which rises as the temperature goes up comes under 35 degrees centigrade. So that when we put it in our mouth, we know okay, it was less than the body temperature already and it is accurately reading the body temperature. And you put, then after doing all these things, then you put it under your tongue. I'm not going to put it under my tongue. You know how it's done. बचपन से बहुत किया है, मेरे सामने से मत बोलो. And after 1 minute of keeping it in your mouth, you take it out and read the temperature. Temperature कैसे read करना है वो मैंने आपको अभी बताया है. So
let me just show you how it looks. I'll just enable the camera again. Yeah, can you see it? You can clearly see the thermometer right now, right? So see, you can see it's from 35 degrees centigrade, 35, 36, 37, 38, 39. And this is the bulb. And this shiny substance which you see over here, this is the mercury. Right now it is less than 35 degrees centigrade. So it's safe to use right now after cleaning it. Then you put it in the mouth. और जहाँ पे भी आएगा, you can put it, and जहाँ तक भी ये mercury level आएगा, that is what the body temperature is right now. So we have to take a certain precautions. Let us have a look at the precautions. So the thing is, thermometer should be washed, as I told you before, and the level should be less than 35 degrees centigrade. And then we should keep the thermometer at a line of sight while reading the temperature. Because अगर हम उसको नीचे रखेंगे ऐसे या something like that, then due to parallax we might not be able to read it accurately. So we have to keep it in the line of sight ऐसे आँख के बराबर, so that we know what perfectly the temperature is. And why we have to jerk the thermometer like this so that it goes under 35 degrees centigrade. So we have to jerk it so that it goes less than 35 degrees centigrade. वरना अगर ये एक मरतबा हमने रीड कर लिया 37 के ऊपर किसी को बुखार है, then you keep it back, it will remain on 37 degrees centigrade, right? तो उसको वापस लाने के लिए you have to jerk it अच्छे से, and like don't do it near a table or anything. किसी को hit होगा तो then it will break, and mercury is a toxic substance, so we don't want that. So we should jerk it, and it should not hit any object. And while it is under 35 degrees centigrade, we take the temperature. And the last thing is, we should not hold the thermometer by its bulb. Now, why do we not? Should we not hold the thermometer by its bulb? Let me show it to you. You can see the thermometer right now. Can you see the mercury level? Yeah, you can see the mercury level. It is less than 35 degrees centigrade. Now let me just hold it from the bulb. I'll hold it from my fingers. You can still see the mercury level, right? See, it's rising. It's rising. It almost reached 35 degrees centigrade. अभी 35 degrees centigrade के भी ऊपर चला गया है. So if I hold it, it will test my body heat. मैं जिसका fever check कर रहा हूँ उसका नहीं होगा. मैंने जिसको जो बल्ब से मैंने पकड़ा हुआ था, it is going to show me my body heat. See, it's constantly rising. अभी भी बढ़ रहा है. Let's see कितना ऊपर तक जाता है. Meanwhile, you go and hit the subscribe button of Unacademy so that you receive future videos of me. Bell icon भी दबा देना, like भी कर देना वीडियो, ताकि मैं और ऐसे experiments कराऊंगा. Then you will be able to see them. Go, 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 go. I'll be waiting. यहाँ पे बस temperature बढ़ रहा है. Okay, so you have subscribed now. ठीक है, I'll remove the thermometer now, and let's see. So there are different kinds of thermometers. मैंने जैसा बोला कि we have to jerk this ऐसे करना पड़ता है, and it should not break because mercury is toxic. Since mercury is toxic, and if the thermometer breaks, it is going to be a chaos, and we don't want that. We have invented new things, and we have a digital thermometer now. Digital thermometer तो आपने देखा ही होगा. So it's very easy. It does not have mercury in it. It's very easy to use. बस उसमें बटन दबाना होता है, and it will show you the temperature. बड़ा सा स्क्रीन पे तो ये लाइन ऑफ साइट में रखना है. वो इंक्रीमेंट्स छोटा छोटा है. 35 37.5 है कि 37.4 है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं. Digital thermometers are easier to use. They are safer as well. These thermometers are also safe as long as they don't break. But once they break, the mercury, it is toxic, and even if you dispose it, it's going to be harmful for the environment. So digital thermometers are the newer version, and they are easier to use, and they are safer as well in general.
एंड देन मैंने बोला था कि इसका रेंज कितना है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का, इट्स फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू, yes, it's from 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. बट इफ आई वांट टू मेजर समथिंग जिसका टेम्परेचर उससे कम या ज्यादा होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा फिर? फॉर दैट वी हैव दिस स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एंड इसका जो रेंज है, इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, which is a huge range. बड़ा रेंज है काफी. And the thermometer is also literally long. You can see how long this thermometer is. कितना लंबा है यहाँ ऊपर से, यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो इसको यूज करने का मेथड थोड़ा सा अलग है. Okay. Precautions are same. You have to always keep it clean. But while using this thermometer, it should be kept upright. इसको टेढ़ा नहीं करना है. अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर तो मुंह में ऐसे लगा होगा, 5 मिनट तक ऐसे रखेंगे. That's not a problem. But with a laboratory thermometer, when you are measuring, it should always be upright, straight ऐसे होना चाहिए. थोड़ा भी क्रॉस ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखा होना चाहिए. एंड इसका जो बल्ब है, बल्ब मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है, this should be surrounded by whatever thing you are measuring. अगर आप पानी का टेम्परेचर ले रहे हैं, I'll just draw it for you. So if this is the thermometer, this line, so it should be totally be submerged, the bulb of it. Basically bulb को कोई और चीज टच नहीं होना चाहिए. It should be totally surrounded by whatever you are measuring. It should not even touch the surface of the object. जिसमें अगर पानी आपके ग्लास में है जिसको मेजर कर रहे हैं, तो it should not even touch the glass. It should be just water around it. And why should it be upright? इसको हम क्रिस क्रॉस ऐसे क्यों नहीं कर सकते? That is because it does not have a kink. अब आप पूछोगे किंक क्या है? तो मैंने बोला था, जैसा हम नॉर्मल थर्मोमीटर है, दिस थर्मोमीटर वी जस्ट कीप इट ऐसे कैसे भी रख सकते हैं. दैट इज बिकॉज अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो दिस पार्ट इट इज वेरी नैरो. तो एक मर्तबा अगर मर्क्यूरी ऊपर आ गया तो वापस नहीं जाएगा. Until and unless we jerk it like this, फोर्स करेंगे तब वापस जाएगा, बट खुद से वापस इजीली नहीं जाएगा. So this part which you see right over here, यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, दिस इज वेरी नैरो. यानी अगर पाइप ऐसा जा रहा है तो जाते जाते वो ऐसा पतला हो जाएगा यहाँ पे, देन इट विल कंटिन्यू द नैरो ट्यूब. So the mercury does not go back in clinical thermometers, whereas the laboratory thermometers don't have this kink. उनका narrow tube is the same throughout. तो अगर आप उसको पानी में से निकाल भी दोगे, अगर आप पानी का टेम्परेचर देख रहे हो, then it will quickly go back to whatever it was easily. So you have to measure the temperature while it is in the substance, and it should be upright. क्योंकि अगर आप क्रॉस करोगे तो then again it will give you a inaccurate reading. So now you know what a kink is and what's the difference between a laboratory and a clinical thermometer apart from the range. Now let's go to this thing called transfer of heat. अभी हमने देखा है कि जो भी चीज हो रही है, it's happening because of heat. तो heat transfer कैसे होती है? So rule of thumb is hot object से cold object को जाती है. Heat is always transferred from a hotter object to a colder object. इसका अगर सिंपल सा एग्जांपल आप सोचेंगे तो ऐसा सोचो कि आप एक रूम में बैठे हो और रूम के बीच में आपने एक फायर लगा दी. ओके, एक बॉन फायर लगाया थोड़ा वुड लगा के, या आपने हीटर लगा दिया. द रूम गेट्स हॉट, राइट? क्योंकि हीट उसमें से निकल के रूम में आ रही है. Whereas if you keep a brick of ice in the room, then what happens? The heat from the room goes to the ice and the ice melts. So you have to remember that the heat always goes from the hotter object to the colder object. It's very simple. अगर आप कभी भी सोचोगे तो हीट कभी भी ठंडी चीज में से निकल के गर्म चीज में नहीं जाएगी. It will always go from the hotter object to the colder object, right? Very logical. So now let's do an experiment. Wait, I'll just set it up for you. Let me get rid of these glasses. So what I have over here, this is a metal strip, okay? ये metal strip है. And what I have done is, by using wax, I have
stuck some screws on it. ये wax से चिपके हुआ है. I have not used any glue or anything. It's just normal wax because wax easily melt हो जाता है and the experiment would be easier for us. So I'll just put it over here. I will switch on my camera so that you can see this. Can you see it? Okay. I will make the setup just a bit. So now you can see that यहाँ से these are screws which are stuck using wax. And now what I will do is I will take a candle. I'll keep it under over here. I will light the candle up. So do not try this at home without supervision from your parents or your elder siblings. Oh my god. मैंने उसको भी बुझा दिया. Nice, I'll do it again now. This is better. So अभी आप देख रहे हैं that it is heating the metal strip. So which of the screws will fall faster? ये वाला या ये वाला? Let's see. गिरा, जो पास वाला था गिरा ना. अभी देखो, यानी हीट यहां से निकल के जा रही है. The heat is going from this place, यहां से उधर तक जा रही है. It's just moving like this. ऐसे ऐसे जा रही है हीट. ऐसे यहाँ थी पहले हीट, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आई. अभी देखते हैं यहाँ पे आएगी तो ये वाला भी गिरेगा. Basically, this is conducting heat right now. गिरेगा कब गिरेगा? Yeah. Let's see how much time it takes. Let's count. 10, 9, 8, 6, 5. Oh, गिर गया. Basically, now we have seen that heat ऐसे यहां से ट्रांसफर होके जा रहा है. जहां पे भी फ्लेम है, I'll put the flame out. It's not safe to keep it like this. Yeah, and I'll show it to you through a diagram now. It would be easier. So you have seen जहां पे फ्लेम था वहां से ये मेटल स्ट्रिप हॉट हो गया काफी and it started spreading the heat. और वो दूसरे डायरेक्शन में जो कोल्डर एंड था, दूसरा एंड कोल्ड था उसका, वहां पे जाना स्टार्ट किया उसने. एंड while transferring like this ऐसा गर्म हुआ and we saw that it went from this corner to this corner because we saw the wax melt and the screws drop in between. तो यहां से गर्म हुआ, हमारे स्क्रूज ऐसे लगे हुए थे. There was a screw here, there was a screw here, there was a screw here. तो पहले ये वाला नीचे गिरा, फिर ये नीचे गिरा, फिर अभी ये गिर जाएगा, लेकिन हमने हटा दिया क्योंकि हम समझ गए. लाइक वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट किड्स, तो हमको समझ आ गया. सो दिस हैपेंड बिकॉज ये जो मेटल स्ट्रिप था, इट वाज कंडक्टिंग हीट. ये हीट को कंडक्ट कर रहा था. कंडक्टिंग मींस इट वाज लेटिंग द हीट ट्रांसफर थ्रू इट. So this is a process. This is called conduction. This is the first mode of heat transfer. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is called conduction. समझ में आया? Very simple, right? तो इसको हम बोलते हैं conduction. And now I will show you another little experiment with this. For which I will have to light it up again. So yeah, so here is the candle.
candle is lit now. What if I want to hold it like this? मैं अगर इसको पकड़ूंगा तो क्या होगा? This is a metal strip. It conducts heat. So I can hold it. अभी बराबर है. Okay, now it's getting hot. अभी ये गर्म हो रहा है. Let me see if I can touch. कहाँ तक है? Okay. Oh no, it's getting hot now. I can't keep. इसको wait. Let me just do one thing. I'll use a piece of cloth. I will tie it. Around it. So now I have a piece of cloth wrapped around it. And I can hold it. I can go ऐसा इतना close भी, and it's not going to affect because the cloth is not going to let the heat come and harm me. It's not going to hurt. And why is that so? Metal में से तो pass हो रहा था. We have just seen that. But why is it not passing through cloth? Cloth में से pass नहीं होता है. उसका simple reason है. That is heat पास कंडक्टर्स में से होता है. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखा था, द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू इट आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दीज आर लाइक मेटल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लाइक सारे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एंड द मटेरियल्स व्हिच डोंट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स. सो दीज आर लाइक प्लास्टिक, रबर, वुड, pieces of cloth, air. Trapped air is also like that. Wool is also a bad conductor of heat. So now you understand that some materials allow heat to pass through it and some materials do not allow heat to pass through it. The materials जो allow करते हैं heat को जाने के लिए उसमें से, those are called conductors. जो allow नहीं करते heat को उसमें से जाने के लिए, those are called insulators. Simple? Understood? किसी को doubt है तो comments में पूछो, I will answer it. So let me do another experiment now. This one is again going to be simple. And this one you should definitely not try at home. You will know why in a moment. Oh, I have to switch on the camera. Okay, so you can see it, right? See, ये देखो wax अभी भी यहाँ पे melt हुआ था. So now the thing is, when I have this, so can I keep my hand on top of this? Ouch! Let me just show it to you properly. If I have, it's going to be very hot. Just see, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, मुझे बहुत hot करेगा. Ow! I cannot keep my hand on top of the flame because it's hot. But side में इतना पास तक मैं रख सकता हूँ. See how close am I getting to the flame sideways? But on the top, oh no, इतना गैप देना पड़ रहा है मुझे, इतना ज्यादा गैप देना पड़ रहा है. And that is because जो कैंडल है, कैंडल में से जो फ्लेम निकल रहा है, देखो it's going upwards. मैं ऐसा करूँ या ऐसा करूँ, does not matter what I do, it's always going up. That is because of phenomena that in fluids, fluid means air, liquid या gas जो भी है, gases and liquid together are known as fluids, okay, because दोनों का properties similar है. So when they are heated, तो warm जैसे ही होगा fluid, it starts moving up, the particles start moving up. तो यहाँ पे जो air है, it started to move up. ये देखो, look at this flame. नहीं, the heat is going up now. सारा flame का heat ऊपर जा रहा है, तो I cannot keep my hand on the top. ऐसा करके हटाना पड़ा, but sideways नहीं जा रहा है. That shows that heat goes, heated molecules start going up. Air या liquid जो भी है, ये ऊपर जाना start कर रहा है. And this is called convection, okay? Because ऐसा करने से अभी हवा गर्म हो रहा है, right? देखो जो रूम में हवा है, it's getting hot. How is it getting hot? It is getting hot because ऊपर का हवा गर्म हो रहा है. Hot air is going away, ऊपर जा रहा है.
और जो साइड से हवा है जो ठंडा है, it is coming in the place and it is going up again. So this is working like a cycle. You can look at the diagram over here. So imagine there is a candle over here, okay? And this part is getting hot. It's a pot. नीचे हमने हीट सोर्स लगाया है and there is water in the pot. तो जो पानी गर्म होगा it will start going up. ऐसा ऊपर जाएगा, it will start going up. और जो साइड से ठंडा पानी है it will come at the place where the hot water was there earlier. फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर साइड से दूसरा जो ठंडा पानी आएगा. ऐसा साइकिल गोल घूमता रहेगा, आखिरकार पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा. तो कन्वेक्शन बेसिकली इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लूइड्स. तो यहां पे क्या हो रहा है, कंडक्शन में कैसा हुआ था, दिस मेटल स्ट्रिप इट डिड नॉट मूव. हमने ये पार्ट गर्म किया, इट बिकेम हॉट, देन स्लोली हीट स्टार्टेड गेटिंग ट्रांसफर्ड, ऐसे यहां पे आना स्टार्ट हुआ, राइट. बट इन फ्लूइड्स दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. फ्लूइड्स में क्या होता है, थोड़ा पार्ट जो है हीट सोर्स के पास दैट विल गेट हॉट, फिर वो हट जाएगा, दूसरा वहां पे फ्लूइड आ जाएगा, चाहे वाटर रहो या गैस रहो, कोई भी एयर रहो, दैट विल कम क्लोजर, दैट विल गेट हॉट, फिर वो ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. पानी ऐसे ही गर्म होता है. दैट्स वाई जो पानी का सारा टेम्परेचर है व्हेन यू आर हीटिंग इट अप, ऐसा नहीं होगा कि वो दिस पार्ट ऑफ वाटर इज कोल्ड, दिस पार्ट ऑफ वाटर इज वार्म, ऐसा नहीं होगा. बट व्हेन यू आर हीटिंग अ मेटल रॉड और समथिंग, दिस पार्ट कैन बिकम हॉट एंड दिस पार्ट कैन रिमेन कोल्ड. बट वाटर में टिपिकली द एंटायर वाटर का टेम्परेचर वुड बी सेम थ्रू आउट. Now this leads to a very interesting natural phenomenon. जो हम, if you are living in a coastal area, you would see this every day. अगर आप कभी गए हैं सी कोस्ट के पास, तो वहां पे आपको ठंडी हवा आती है. Why does that happen? Let's have a look. That is called, तो जो सूरज है, see this is the sun, you can see, ये सन है. सन से हीट निकलती है और वो पानी पे भी जाती है और वो जमीन पे भी जाती है. It heats up the land and the water. But the difference is, जब जमीन के ऊपर सूरज का सनलाइट हिट करता है तो it heats up fast, जल्दी से गर्म हो जाता है. अपने सन ने ऐसा वो हिट किया, उसको सनलाइट आई उसके ऊपर एंड स्टार्ट्स. आप गर्मा में बाहर जाते हैं, सुबह सुबह भी आपको रोड गर्म दिखेगा. लेकिन अगर आप गर्मा में सुबह सुबह पानी खोलोगे टाकी का, it will be cold, उतना गर्म नहीं रहेगा अभी, राइट. But as the day goes on, the water will start getting warmer. That is because पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है. हमने देखा क्यों लगता है, क्योंकि कन्वेक्शन, वो पानी एक जगह गर्म नहीं होता. It has to keep on, like different parts of water heat up, they move, then the new part of water comes in and that it has to heat again. पानी पूरा का पूरा एक साथ गर्म नहीं होता. पानी का कुछ पार्ट गर्म होता है, वो वहीं पर रहता है, वो वहां से मूव होगा, तो फिर दूसरा ठंडा पानी वो एरिया में आएगा, फिर वो उसके ऊपर सनलाइट आएगी, तब वो गर्म होगा. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द वाटर टू हीट अप. तो यहाँ पे देखो, द वाटर विल रिमेन कूल फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द डे, वेयर एज द लैंड विल बिकम हॉट. अभी क्या होगा, जमीन तो गर्म हो गई, लैंड हैज हीटेड अप, तो इसके ऊपर जो हवा है, द एयर विच इज देयर ऑन द लैंड, दैट विल आल्सो गेट हॉट एंड देन इट विल राइज अप. बिकॉज व्हाट डिड आई से, कन्वेक्शन में क्या बताया था, गरम हवा या गरम फ्लूइड जो भी है वो ऊपर की तरफ जाता है. सो दिस एयर विल गो अप. नाउ ये एयर चला गया तो इट कांट रिमेन एम्प्टी, राइट. वहां पे एम्प्टी तो नहीं रहेगा. तो द कूल एयर विच इज देयर ऑन द टॉप ऑफ द सी, जो वाटर के ऊपर है, दैट विल कम टू दिस प्लेस एंड इट विल टेक इट्स प्लेस. फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वो भी गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर समंदर से ऐसा हवा आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर समंदर से हवा आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, एंड द साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द डे. तो ये ऐसा चलता रहेगा, ऐसे 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 जाता रहेगा, ये ऊपर जाएगा, यहां से और आएगा. तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, क्योंकि ये समंदर से ठंडी हवा आ रही है, सी से हमको ब्रीज आ रही है. दिस विल हैपन एज लॉन्ग एज द वाटर रिमेन्स कूल. शाम तक लेकिन सूरज चूंकि बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, the sea water will also get hot, वो भी गर्म हो जाएगा. लेकिन after sunset the land will cool down, क्योंकि जमीन जल्दी गर्म होती है, वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी. the land will heat up sooner and it will easily lose the heat and become cool fast as well. rapidly heat होगा, rapidly cool down भी होगा. but
द वाटर, अभी जो पानी है ये देर तक गर्म रहेगा बहुत. What will happen now? जो पानी के ऊपर हवा है, the water air which is there on top of the sea, that is warm now, so it will go up. And the cool air which is there on the land, it will come in and takes its place. तो यहां से ठंडी हवा आएगी और ये वाला प्लेस ले लेगी. बेसिकली द साइकिल रिवर्सेस नाउ. अभी जमीन से ठंडी हवा आएगी, समंदर के ऊपर जाएगी, वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी, फिर ठंडी हवा आएगी, फिर ऊपर जाएगी, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, क्योंकि ठंडी हवा अभी लैंड से समंदर की तरफ जा रही है. एंड दिस इज लाइक कूल ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. नाउ कम्स द क्वेश्चन. ये समझ में आ गया ना? लाइक वेरी नेचुरल फिनोमेना है, काफी कूल कॉन्सेप्ट है, वैसे इजी टू अंडरस्टैंड. अगर आप कोस्टल एरिया में कभी गए हो तो इसको नोटिस करना नेक्स्ट टाइम, और अपने है ना फ्रेंड्स को भी बताना कि ऐसा होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वन क्वेश्चन इज देयर. अभी जो सन है, सन से हीट लेकिन लैंड तक आ कैसे रही है? हाउ इज द हीट फ्रॉम द सन कमिंग टूवर्ड्स द लैंड? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? देखो, हमने अभी तक दो मेथड्स पढ़े हैं, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन. कंडक्शन में क्या है? देयर इज अ मटेरियल व्हिच इज कंडक्टिंग हीट, हीट ये कंडक्ट कर रहा है. आप इस साइड को गर्म करोगे तो ये स्लोली 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 पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, कोल्ड वाला साइड भी गर्म हो जाएगा. बट हमारा पास सूरज से लेके जमीन तक, धरती तक, लाइक फ्रॉम द सन टिल द अर्थ, वी डू नॉट हैव अ कंडक्टिंग मटेरियल. वहां से कोई रॉड लगा हुआ है क्या? सूरज से एक रॉड लगा हुआ है जो दुनिया को आता है, जो गर्मी पहुंचाता है? नो, ऐसा तो नहीं है. फिर कन्वेक्शन होता है क्या सूरज? बट कन्वेक्शन के लिए तो हमको कोई फ्लूइड चाहिए. कंडक्शन के लिए कोई सॉलिड तो नहीं है, ठीक है, दैट इज देयर. कन्वेक्शन के लिए हमको फ्लूइड चाहिए, तो फ्लूइड भी नहीं है. लाइक सन से लेके अर्थ के बीच में देयर इज नथिंग इन बिटवीन. इट्स अ वैक्यूम, राइट? दोनों के बीच में देयर इज नथिंग. इट्स अ वैक्यूम. वैक्यूम इज हवा भी नहीं है. Then how does the heat come from the sun to the earth? जमीन से गर्मी कैसे आती है? That is the third mode of transmission of heat. Heat transfer का वो थर्ड मेथड है. आपने देखा होगा कि सनलाइट आती है और सनलाइट के साथ में हीट आती है. बेसिकली लाइट जब सन से आती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट ब्रिंग्स द हीट अलॉन्ग विथ इट, ओके? और लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है. द ट्रांसफर ऑफ हीट जब हो रहा है तो उसको मीडियम नहीं चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड रेडिएशन, और थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं इसको. सो व्हाट हैपेंस इज हीट ट्रांसफर ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? एंड इसके लिए उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, कोई मेटल रॉड नहीं चाहिए. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. एंड दिस इज अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप देखोगे सूरज से लेकर जमीन के बीच में कोई चीज नहीं है, बट स्टिल वी गेट द लाइट फ्रॉम द सन, स्टिल वी गेट द हीट फ्रॉम द सन. और ये दोनों अगर नहीं आएंगे, देन द अर्थ विल नॉट रिमेन एज इट इज. वी वोंट बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ. I will now show you an example in which all three modes of the heat transfer are there in one single instance. So you see here we have a log जहां से fire निकल रहा है. It's a bonfire kind of thing. तो इसके ऊपर से जो फ्लेम के ऊपर से आ रहा है, that is convection. वहां पे एयर पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं and they are moving up because of heat. और हम हाथ जब तापते हैं ऐसा आग के ऊपर हाथ रख के, that is because of convection. And अगर आप उसके अंदर कोई मेटल रॉड डालोगे, एनी कंडक्टिंग मटेरियल, दैट विल आल्सो स्लोली हीट अप. ऐसे यहां से हीट आएगी 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 एंड इट विल हीट अप स्लोली. तो दैट इज कंडक्शन. एंड साइडवेज अगर आप देखोगे, साइडवेज तो कन्वेक्शन होता नहीं है, बट द लाइट फ्रॉम द फायर स्टिल कम्स फ्रॉम द साइड्स, राइट? लाइट तो हर साइड से आती है. लाइट विल गो ऑन द टॉप एज वेल, इट विल गो ऑन द साइड. Along with the light, along with the electromagnetic waves of the light, heat also transfers and that is called radiation. तो आप आग के साइड में बैठोगे तब भी आप हाथ गर्म कर सकते हो. You don't have to keep it on the top. So all three instances of heat transfer, that is convection, conduction and radiation, can be seen in this example. So now we are towards the ending of the chapter. आपको ये mode of transfer समझ में आ गया. हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? थर्मोमीटर्स के टाइप पढ़े, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड यस डिजिटल थर्मोमीटर पढ़ा है. तीनों टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़े. उसके बाद में हमने हीट ट्रांसफर कैसा होता है वो देखा. देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर.
First one is conduction, second one is convection, and the last one and the most coolest, यार ये सुपर हीरोज के पास होता है रेडिएशन वगैरह सारी चीजें. So the last one is radiation. Now let's have a small experiment again. ये experiment मैं नहीं करूँगा, आपको खुद करना है. Okay, this is something which you can do at home. Take two metal glasses or any utensils. Paint one of them black, उसके ऊपर black paint कर दो और दूसरे को white paint कर दो and keep them in sunlight for some time. After 15 minutes, just check which one gets hotter. काला वाला ज़्यादा गर्म हुआ है या white वाला ज़्यादा गर्म हुआ है. You do this experiment tomorrow and let me know in the comments how did it go. So the theory behind this is light जो आ रहा है, light is reflecting, right? Light, मैंने कैसा बोला, radiation happens along with light. So if I'm wearing a black t-shirt, light इससे reflect नहीं हो रही है. But if I have the science textbook, ये आपका science का textbook है, you can see the light is reflecting, right? ये आपको light का reflection दिख रहा है because it is lighter in color. ये light color है, light colors reflect light, dark colors absorb light. तो ये ज्यादा absorb करता है. आपको reflection कोई नहीं दिखेगा black पे से. You look at my hair versus my face. My face is reflecting more light than my hair because my hair are darker in color than my face. तो इससे हमको पता चलता है कि darker colors absorb light and lighter colors reflect light. और मैंने क्या बोला था? Heat also travels along with light. Sunlight के साथ heat भी आता है. So which means if there is an object which is darker in color, it will absorb the light as well as the heat. तो वो जल्दी गर्म होगा. And if there is an object which is reflecting light, which is lighter in color, then it will reflect heat as well. And that is the reason जब हम गर्मा में कपड़े पहनते हैं, when we wear clothes in summer, those are lighter colors. Summer colors are always light, white, light blue ऐसे colors होंगे. And winter में we wear darker clothes, like maroon color का पहनेंगे, olive green sweater पहनेंगे, because these are all darker colors and they absorb the heat. So that is the reason why we wear different kinds of colored clothes in different seasons. And the very last thing which we are going to study about is a very classic question. Would you take one thick blanket or two thin blankets on a very cold winter night? Which one is better? Tell me, what do you think is better? Comments में बताओ मुझे. I am reading the comments. I will explain. See, if you take two thin blankets, then there is air in between. यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा air trap हो जाएगी, right? जहाँ पे मैं red dots डाल रहा हूँ, यहाँ पे सारा में air आ सकती है. And what did I tell you? Trapped air is a bad conductor of heat. It's an insulator. तो अभी क्या हो जाएगा? The air will come to your aid, and two thin sheets of blanket along with air would be warmer for you than one thick sheet of blanket. Understood? Nice. तो ये था कॉन्सेप्ट. काफी सिंपल सा चैप्टर था. हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. आई होप यू एंजॉयड देम. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, बल्कि ये वीडियो के बाद में आपको जाके एक्सपेरिमेंट करना है. फर्स्ट वाला, जस्ट टेक 3 glasses ऑफ वाटर. एक में ठंडा पानी डालो, एक में थोड़ा वार्म वाटर. इट शुड नॉट हर्ट, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए. एंड सेंटर वाले में टैप वाटर डालो एंड जस्ट टच. इसमें थोड़ी देर फिंगर डालो, इसमें थोड़ी देर फिंगर डालो. सी विच व्हाट डू यू फील आफ्टर लाइक चेंजिंग योर फिंगर्स. क्या और गर्म दिखता है और ठंडा दिखता है? एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. कूल. और मैंने जो सेकंड एक्सपेरिमेंट बोला था, यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन द कमेंट्स टुमारो. So that was the end. Thank you for coming and visiting this. I hope you liked it and understood all the concept. If you have any more doubts, you can ask them. And one last thing, just before this video ends, you have to go and subscribe to this channel. Go and tell your friends, your family members to come and subscribe. जो भी आपके friends हैं, classmates हैं या आपके siblings हैं जो 6th, 7th, 8th class में होंगे, ask them to subscribe and attend the live classes every day. हम बहुत सारे experiments करने वाले हैं और साइंस को इतना फन, I can promise you, आपने पहले कभी नहीं किया होगा. Cool? Okay. Bye bye. See you tomorrow.